another? What would be the reason to go study abroad? Just to make the money? Dollar, pound, ठीक है? ध्यान में तो यही होता है ना, we wanna make money. Yeah, obviously this is the main reason to go abroad, to make the money. If you want to come back in Pakistan again, then excuse me. So to make the money is not the, I think, bad thing. What do you think? Is it a bad thing to make money? No, sir. Not at all. ठीक, आपको जो है वो पैसे भी बनाने हैं लाइफ अच्छी गुजारने के लिए, ठीक है, इसीलिए आप इंजीनियर्स बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको जो है वो जाकर वापस आना है या नहीं आना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको जाकर वापस आना है? जी, पाकिस्तान वापस आना है, सर्व करना है अपने मुल्क। हाँ, फोर्सली नहीं, खुशी से जिनको वापस आना है। Only 3 people or 4 people are there who wants to come back. तो क्या आपने वो सुना है कि वो घर जल गया मेरा घर के चिराग से? ये वर्ड सुना है कभी? ठीक है, क्या आप उन लोगों में से? नो सर। देखिए, अगर हम जाकर वापस नहीं आएंगे तो हमारे छोटे बहन भाई या हमारे बच्चे या हमारी कजन्स के बच्चे जो नहीं जा सके, वो कैसे अच्छी जो एजुकेशन लेंगे? मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दिस इज माय लाइफ, ठीक है ना, सेल्फिश, इजंट इट? देखिए, व्हाट आई थिंक कि अब्रॉड जाना आपके लिए इस वक्त नीड है, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके जहन में है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है, लोग जाते हैं, जाके कुछ अच्छी एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन टेक्निकल प्रोग्रेशन पाकिस्तान इज वेरी बैकवर्ड। और अगर आप अब्रॉड देखें तो जाहिर सी बात है उनकी जो इस वक्त सलाहियतें और चीज़ें हैं, भले वो उसके पीछे जो भी रीजंस हैं, ठीक है, कॉन्स्पायरेसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बट इवन देन वो अभी अपर एंड पर है, इसीलिए आप चाहते हैं कि वो सीखें, लेकिन उसके सीखने का मकसद ये होना चाहिए कि उससे पाकिस्तान को फायदा हो, कम वॉट में, ठीक है। आपके पेरेंट्स यहाँ पर होंगे, आपके कोई ना कोई रिलेटिव यहाँ पर होंगे, आने वाली नस्लें होंगी, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, तो यू शुड कीप इन योर माइंड। ओनली 3 of them actually are raising their hands if you want to come back just because of our country, ठीक है, why don't you? You should keep in your mind। देखिए, आपके लिए मैं कोई मतलब कदम नहीं लगाऊंगा कि यार पैसे नहीं बनाने चाहिए। You should make money to spend a good life, better life, लेकिन अपनी थिंकिंग को जरूर मोल्ड करें उस पर कि अगर मुझे पाकिस्तान में सर्व करने का अच्छा मौका मिला, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो डेफिनेटली आई विल कम बैक टू सर्व माय कंट्री। सभी निकल जाएंगे तो कचरा ही बचेगा ना पीछे, भाई सारे लिटरेट लोग ही बचेंगे ना। जब लिटरेसी रेट आपका जो है वैसे ही इतना कम है और तमाम लिटरेट लोग चले जाएंगे तो इलिटरेसी तो और बढ़ जाएगी, तो आप कैसे बस आप सिर्फ अपनी जिंदगी बनाएंगे? नहीं, यू शुड कीप इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल ऑफ दैट। अच्छा, सेकेंडली अब ये बताइए कि इसके अलावा और क्या रीजन होते हैं अब्रॉड जाने के? थिंक अबाउट इट। हो सकती है कल्चरल डिफरेंस होता है, टेक अ न्यू कल्चर, ठीक है, मेक न्यू लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, देन आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, आई हैव बीन टू मेनी टाइम्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस और यूरोप, मिडल ईस्ट, alhamdulillah, I have been there all of those places, but I like Pakistan. I still prefer Pakistan. I'm here to serve you guys. वरना मुझे भी बेटर लाइफ के लिए कोई मसला नहीं है, I can move anywhere in the world. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर्स हैं जो मुझे अपना खुद ऑफर करती हैं कि आप आ जाएं, हमारी मार्केटिंग देख लें, ये कर लें, लेकिन बट आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ हियर बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, ठीक है। तो हमें, आई एम मेकिंग मनी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। बहुत नीचे से ऊपर तक आने के लिए ना आपको बड़ी स्ट्रगल होती है,
हर आदमी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, आपके पीछे भी होंगी। अभी आप जिस एनवायरनमेंट से आए हुए हैं, जिस तरह आप ये एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियर्स बनेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो आपको अच्छा सर्व करना है, ठीक है, अपने मुल्क के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, अपनी फैमिली के लिए भी करना है। अच्छा, इसके आगे अब ये सारी चीजें तो है, अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे रीजन हमारे पास मौजूद है, वी शुड गो अब्रॉड। सो विच कंट्री शुड वी गो, व्हाट यू प्रेफर? Everyone has different circumstances regarding their finances, so you know that you want to get, everyone wants to get the scholarship, isn't it? ठीक है, हमारे पास जितने एनईडीएस स्पेशली आते हैं ना, वो कहते हैं सर 100% स्कॉलरशिप दिलवा दें, ऐसे ही है। क्योंकि आप लोग जिस कम्युनिटी से, और हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एवरेज फैमिलीज से, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फंड्स की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि मेरे वालिद के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हों, एंड मैं बिलावल दरदारी तो हूँ नहीं ना, तो मैं जाऊँ मयाशी करूँ और आराम से जो है वो, ना ही मैं इमरान खान हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, या मेरे ब्यूरोक्रेट्स वालदैन नहीं हैं, और स्पेशली कराची के अंदर, ठीक है, हम इस्लामाबाद में तो है नहीं ना इस वक्त। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है बड़ी लिमिटेड होती हैं, और हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी पड़ती है, हमें उनको क्रिएट करना पड़ता है। तो आपके नज़र में आपको पता है कि सबसे एनईडीएंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ क्या है? आपने सुना तो होगा, हैव यू हर्ड अबाउट द ग्रेजुएट वीजा स्कीम इन ऑस्ट्रेलिया? Graduate visa. Has anybody heard about it? About the skilled graduate visa 476? No. देखिए, ये इंजीनियर्स के लिए वीजा है। आप कहते हैं सर मेरे पास तो है 2 लाख रुपए जाने के लिए, ठीक है, या वो भी नहीं है जैसे उन्होंने कहा, ठीक है भाई, नहीं है ना, ठीक है, नहीं है, मुझे हकीकत से पर्दा नहीं है ना, नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो अब्रॉड, और आई डोंट हैव राइट टू गो अब्रॉड, आई डोंट हैव राइट टू गो फॉर द बेटर लाइफ। शुड आई गो और कैन आई गो? Yes, you can. Because in Australia, they are giving the opportunity for Washington Accord affiliated universities or courses who have done their bachelor in engineering, they can go Australia for work visa directly to get a good job over there. It's a skilled graduate visa in which you'll get 18 months visa, and you can go for seeking a new job over there, and if you got the job, then you can stay over there, then you can get the PR over there. और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है खास, एक वीजा फीस है, ठीक है, और आपकी जो है वो ऑल टुगेदर कोई हार्डली 1.5 से 2 लाख रुपए आपके लगते हैं, जो कि आपके 800,000 डॉलर भी नहीं बनते हैं, और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। जबकि अगर आप स्टडीज पे जाते हैं, आपको आइडिया है मास्टर्स पे जाने की कॉस्ट क्या है? SPE पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे 45 lakhs, 60 lakhs, another one 80. That's a good answer. Depend upon the university. ठीक है, हम अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने जाना है, ठीक है, तो आपको तकरीबन अराउंड 25,000 डॉलर से लेकर आपको 60-70,000 डॉलर तक की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, और टोटल इन ऑस्ट्रेलिया दे हैव ओनली 43 यूनिवर्सिटीज। आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज कितनी हैं? Do you know about it? Around the world, we have only 55,000 universities around, right? In which only 43 universities in Australia and 8 universities in New Zealand, 200 universities in Germany, and 143 universities in UK, and around 5,000 universities in
USA. Listen, PKG तुमने बात 5,000 universities in USA. So what do you think? Where should we go? पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? Sorry, around 23 private and government sectors. आप ये देखें कि if you want to go abroad, ठीक है, आपको पहले तो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कहाँ हम जा सकते हैं। डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या चीज है? आपके फाइनेंसेस। देखिए, एकेडमिक क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई मैं ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स करूँ, ठीक है ना, मेरी ख्वाहिश है मैं आईवी लीग से जो है ना अपने मास्टर्स कंप्लीट करूँ। डू यू नो अबाउट द आईवी लीग? हैव यू हर्ड अबाउट द आईवी लीग? हार्वर्ड, प्रिंसटन, बार्कले, MIT, दे आर इन आईवी लीग। जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज यूएस के अंदर हैं वो आईवी लीग के नाम से मशहूर है। इसी तरीके से अगर आप यूके की बात करें तो वहां पे 12-20 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप नॉच कहलाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रोवेट कहलाती हैं, ठीक है। क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं? वहां पे स्कॉलरशिप मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मेरिट के ऊपर मिलती है, बिल्कुल मिलती है। यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ऑनलाइन, वी कैन हेल्प यू आउट। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें हमारे एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, हमारे पास फर्ज करें मेरी CGPA कम है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ जा सकता हूँ? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना एकेडमिक क्राइटेरिया। व्हेन यू आइडेंटिफाई योर एकेडमिक क्राइटेरिया, देन you have to realize about your finances. Can we apply for this university? Oh my God, it's a 50,000 university per annum. Is it possible for me to afford it? No, not at all. What should I do now? मुझे फिर ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मेरे एकेडमिक के साथ साथ मेरे फाइनेंसेस भी मीट हो। अब मुझे अपने फाइनेंसेस का पता है यार, मेरे पास तो टोटल है 30 लाख रुपए, तो फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं इस कंट्री में जाता हूं। मेरे पास है 60 लाख रुपए, तो मैं इस यूनिवर्सिटी में जाता हूं। मेरे पास है टोटल 5 लाख रुपए, मेरे पास है टोटल 2 लाख रुपए। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू स्टडी अब्रॉड? या स्टिल वी हैव द ऑप्शन फॉर यू गाइस, देन यू कैन स्टडी अब्रॉड इन डिफरेंट डेस्टिनेशन, स्पेशली एज आई मेंशन्ड बिफोर दिस वन, दैट यू हैव द ऑप्शन फॉर USA, UK, Australia, New Zealand, and Canada, and we have the big market for Europe as well, Italy और जर्मनी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना आना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन है कि मैं जाके कोई अच्छी एजुकेशन लूं कहीं पर जाकर, तो आप यूजुअली नेट पर आप देख रहे होते हैं ना, आजकल जैसे कनाडा जाना बड़ा आसान हुआ है। आप लोगों में समूह ने सुना होगा कि ये यूट्यूबर्स ने इतने क्लिक लेने के लिए तो कम से कम ये कर ही दिया, सब लोग उसके ऊपर चले जाते हैं। कनाडा ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब के जरिए निकल जाएंगे तारों से। हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं सर कनाडा तो बड़ा आसान है आजकल। इवन मैं आपको बताऊं, मतलब मैं इट्स बीन अराउंड 18 years आई हैव मेंशन्ड बिफोर दैट आई एम रनिंग दिस कंपनी, आई एम एजुकेशन कंसल्टेंट एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट एज वेल। सबसे मुश्किल इस वक्त अगर कहीं जाना है तो वो कनाडा है। स्किल्ड माइग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। किसी का डबल मास्टर्स हो, 8 men each IELTS हो, ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, उसकी एज 32 हो, इवन देन ही इज नॉट एबल टू गो ओवर देयर, ही इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। व्हाई? द पॉइंट सिस्टम हैज बीन रेज्ड, द पॉइंट एक्चुअली इट्स अराउंड 500 पे वहां पे जो है ड्रॉ हो रही है, आपके सारे पॉइंट मिलकर भी 440 पे खत्म हो जाते हैं। तो ये यूट्यूबर्स की बात पर या सोशल मीडिया की बात पर जरा यकीन कम रखिएगा, प्रैक्टिकल होके, ठीक है, ज्यादा सोचिएगा। किसी से एडवाइस लेना यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, लोहार का काम और सुनार का काम लोहार नहीं कर सकता। जो चीज आप अपने उससे आजकल फिंगर टिप्स पर है, भाई मैं ऑनलाइन अप्लाई कर लूं, व्हाई डू आई नीड टू कंसल्ट द कंसल्टेंट्स? भाई मुझे तो जरूरत नहीं है ना कंसल्टेंट की, हर चीज ऑनलाइन मौजूद है। लेकिन जो काम आप 1 साल लगाने में करेंगे, तो कंसल्टेंट हो सकता है आपका जो है वो 10 मिनट में कर दे। जिस चीज को आप लर्न करेंगे इतने अरसे में,
आप जो पॉइंट मिस करेंगे वो चीज आपकी एक कंसल्टेंट आपके लिए सर्व कर सकता है। इसका जैसे इंजीनियरिंग देखिए ना, मेरा हमारी क्लास में मेरा डोमेन नहीं है और मैं खड़ा हो जाऊँ ये उसने इसका जो है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो क्या मैं नहीं कर सकता? इक्विपमेंट मिल जाएगा, सारी चीजें पड़ी हुई हो, तो शायद कुछ सालों में तो मैं भी कर ही लूंगा। लेकिन आप में से एक आदमी उठेगा who has experience and he can do in an hour because he knows about it कि ये पुर्जा कहाँ पे कैसे लगे। ठीक है, यहाँ पे आप तो पेट्रोलियम वाले हैं, डिगिंग इधर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको तो ये पता है। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू एज एन एजुकेशन काउंसलर एज वेल। ठीक है, आपको ये बात जाननी है कि आपको अपने साथ बेहतर कैसे करना है। अपने साथ जो आदमी बेहतर की उम्मीद रखता है ना, वो ही बेहतर कर पाता है। बस अपने साथ डाले निमने, और जो एजुकेशन का ये पीरियड है इसको बहुत अच्छे से गुजारें, अच्छी लर्निंग करें। पूरे वर्ल्ड आपके लिए खुली हुई है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपकी फैकल्टी पेट्रोलियम की डिमांड बहुत है, कनाडा में डिमांड बहुत है आप लोगों की। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली हायरिंग होती है। मैं आपको मजे की बात शेयर करूं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, किसी को अंदाजा है कनाडा में एक पेट्रोलियम इंजीनियर की तनख्वाह क्या है, सैलरी क्या है? आप लोग कर तो रहे हैं, वो तो एडमिशन किसी और डिपार्टमेंट में नहीं मिला तो इधर ले लिया, ऐसा तो नहीं है। पैशन है ना, पैशन के थ्रू बताएं कि अगर आपने वर्किंग की है तो डू यू नो एनीवन दैट व्हाट इज द सैलरी इन कनाडा फॉर पेट्रोलियम इंजीनियर? अप्रोक्सीमेट, मिनिमम और मैक्सिमम, डू यू नो द ब्रैकेट ऑफ दिस? चेक करो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो एवरेज सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज में वो बनती है 75 लाख रुपीज पर मंथ। सन्नाटे में आते सोच रहे हैं मैं भी ये कमाऊंगा। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में अराउंड 75 to 80 लाख रुपीज पर मंथ, और उसमें भी 15 डेज आपकी ड्यूटी होती है। यू हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज इन मिडिल ईस्ट एज वेल। ठीक है ना, कतर में, इधर उधर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बहुत सारे आपके डोमेन्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये हमारी एनीवेज ये स्किल वीजा स्टडी अब्रॉड। एंड हमारे साथ यहाँ पर खुरम साहब भी मौजूद हैं जो कि हमारे को पार्टनर आप कह रहे हैं, साथ में हम मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इनकी एक्सपर्टीज इटली और जर्मनी की है। स्पेशल ये इसको ट्रीट करते हैं। पाक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के नाम से आपने नाम सुना हुआ होगा, खासा ज़्यादा मशहूर नाम है। ठीक है, उसके ओनर भी यही हैं, सीईओ भी यही हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर खुरम हियर and he can let you know about the study abroad, especially in Italy and Germany. I will first let presentation let the presentation complete first. So I'll. All right. First, we will see the presentation because Mr. Suhail is there and he is giving the presentation for study abroad or Italy or Germany, right? Thank you very much. यार लोग तो देख रहे हैं, व्यूज आए थे मेरे पास। चेक करो कहीं आ रहा होगा।
अरे यार यार, इसके पास लिंक ही नहीं आ रहा। तू देखो इसके पास लिंक है। ये लिंक शेयर नहीं करना, यूट्यूब वाला करना है। बेकार हो तो अभी तो बंदे आए हैं, यूट्यूब वाले पे क्या शेयर करोगे, वो भी शेयर करोगे। क्या इनके लैपटॉप में भाई नहीं, HDMI नहीं, तो काम नाम भेजे मैंने। ओ HDMI का ऑप्शन नहीं है। सही सही मैंने बोला दिखा देते हैं, इसकी भी एक स्नैप बना लेते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं। मैक्रो एजुकेशन कंसल्टेंसी, अच्छा ये एजुकेशन कंसल्टेंसी सारी। फ़ोन कैसे होता है? फ़ोन तो ऐसे होता है। अच्छा कामरान भाई करेगा वो दूसरी VGI केबल लेंगे, वो VGI केबल लेंगे। आ रहे हैं वो, आ गए पकड़ 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 तो उधर को उधर चलना चाहिए। कहाँ? यहाँ से सही नहीं आ रहा। I'm representing at the moment Bhagwat Institute here. आप लोग की शायद नॉलेज है, हमारा नेम गुजरा होगा क्वेश्चन इकबाल में बहुत पुराने काफ़ी कराची में काफ़ी ब्रांचेस रही हैं। एट द मोमेंट वी आर एट 2 प्लेसेस इन क्वेश्चन इकबाल एट नॉर्थ नासरवा। हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं इस वक्त। अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट है वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एजुकेशन वेयर IELTS प्रिपरेशन मेनली English language courses, German courses, and other courses we are providing here, as well as we are consultants for study abroad. So हमारी opportunity जो है consultancy की, that is corporate consultancy services, वहाँ के प्लेटफॉर्म से हम स्टडी अब्रॉड पर काम करते हैं। पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग विद, और इसके लिए भी हमारे कंसल्टेंट आबिद साहब आपसे डिस्कस भी करेंगे। और आप लोगों के सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। यू कैन चूज where actually you are intended to go. There are different options available in Germany, in UK, in Italy, as well as in Canada. अच्छा ये लैंग्वेजेस के लिए है। Profile and according to your requirement, where you would like to go, right? So we'll see according to your profile, and our staff is here. They are also taking your profile. If you are interested, you can consult us for the free consultancy services as well. And at the moment our staff is also available. अगर आपको कोई information चाहिए होगी तो we can also entertain you to go ahead, right? If you move forward, थोड़ा सा आपको अपने बारे में ब्रीफिंग दे देते हैं ताकि आपको आइडिया। वैसे हम we are working since 1997, ठीक। So it has been almost over 25 years हमारा इदारा काम कर रहा है, और mainly we are dealing with educational purposes. Our main purpose is to focus on education,
We have got our schooling system as well. Uh, और अभी हमारे अगर मिशन की बात करेंगे तो एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एजुकेशन का एक तो जो हमारे पास इस वक्त सिस्टम है उसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वी कैन इम्प्रूव कैरियर काउंसलिंग इज आवर मेन पार्ट उसमें हम देख रहे होते हैं जैसे कि अभी सर काशिफ ने यहाँ बताया है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है जो हमारा यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जब बाहर आते हैं तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एक और पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि यूट्यूब अक्सर लोगों का ख्याल है कि क्लिक करेंगे और शायद हम दरिया के उस पार समंदर के उस पार पहुंच जाएंगे बट इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको प्रॉपर सर्विसेज या प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में हमारे इदारे हैं जिसमें से एक हमारे पास कंप्यूटर कंसल्टेंट मौजूद है यहाँ पर। तो आप लोगों को गाइडेंस की यहाँ पर के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को कोई भी काउंसलिंग लेनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप उसके बाद आप केस परस्यू करते हैं आगे जब बढ़ते हैं फिर हम उसमें फर्दर आपको डिटेलिंग बता सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी एट द लोएस्ट वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर रेंज एंड रिक्वायरमेंट एंड वेयर द कंट्री वुड लाइक टू गो। अच्छा हमारे साथ हमारे चेयरपर्सन होती हैं एट द मोमेंट शी इज नॉट अवेलेबल मैडम मुसरत नदी she is being basically the co-founder of Park British Institute or Park British Academy at the moment Park British Schooling System and our director is Mr. Adit Puram is available at the moment and he is our executive director as well as he is dealing directly to the consultancy inquiries or queries of the students right. And giving you a short introduction, we have got our DN and director. This is he is basically a PhD in CSR, Dr. Izaha Beg. He has been with us as well. So जो हमारे पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेसिकली दे आर बिलोंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इसलिए ज़्यादा सीरियसली एजुकेशन के बारे में फील करते हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दो के ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस बट लेकिन बिजनेस के पीछे लोग कौन है उसका पीछे मोटिव क्या है are they here only to earn or are they here only to like provide ले ले थोड़ी सी so this is one of बैकग्राउंड आपको बताने की जरूरत है। हमारे साथ सर अब्दुल रहमान भी होते हैं ये जो हमारे करिकुलम के लिए in Benoria town he is one of the head of academics in Benoria town as well so he's been like one of the important personality here immigration के लिए अगर आप interested होंगे so we've got personality here with us this is Mr. Naman Sadir Canadian consultancy या Canadian immigration के लिए is he is a master so अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है any one of you or from your family if anybody is interested Canadian immigration so the guy can be fruitful for you so again ये सारी बातें you can take it to your pockets whenever you want to get in touch we'll give you our contact numbers you can contact us or the spot if you want to have any information you can. Furthermore, I'm the guy here. Basically, I'm a trainer as well, and there I'm the administrative part of this institute as well. We've got here Virgil Augustine with us. He's been our IELTS trainer, and mainly अगर आपको मालूम हो कि IELTS इस वक्त एक बहुत important requirement है for all university students. Wherever you want to go to any destination in the world, IELTS is now mandatory. और जहाँ मैंडेटरी नहीं है वहाँ वीज़ा सक्सेस के चांसेस भी उसी तरह से ही हैं ठीक है। For IELTS if anybody is interested for IELTS preparation we've got a lot of experience as I said we have been doing it since 1997 we have got my different trainers I'm also one available here our executive director is also our chairperson used to be also the trainer at the moment she is doing but she is doing now this online and we are available online for all global facilities for our clients and for our students as well ठीक है। और ये हमारी काउंसलर्स सब अवेलेबल हैं तहरीर तारिफ शी इज आल्सो अवेलेबल हियर German language is another important part for being an engineering student for all of you Germany is like a place जहाँ पर आपको बहुत opportunity मिल सकती है so German language can be your ticket to that if you are interested for going for the German language A1, A2, B1, B2, whatever the level you are looking for. So Sam Mukash is with us, and he has been to Germany as well as a student as well as professional. Now he is working with us. We have got a team. This team is in
is short now at the moment. We have been to Malaysia as well recently, and as I said, IELTS we are doing with Harvard Institute. There are some services we are doing with English language, IELTS preparation, TOEFL, the GRE, UK, UKI. It's an important test for UK visa, and of course computer courses for any executive English if you are interested. We are also dealing with it, and there is also interview preparation for if you are going for any embassy for interview. So we do provide interview preparation services also. तो हमारे पास जो स्टाफ है वो टेक्निकली अगर आप देखें तो साउंड इन्फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में रहे बहुत अरसे से चीज़ों को जानते हैं। अभी सर काशिफ आपके सामने थे, सर आबिद अभी आपके सामने, संपूर्ण अभी आपके सामने आएंगे, तो वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको अगर हमारे साथ कोई भी रिलेशनशिप होगा फॉर योर फ्यूचर करियर, सो इट विल बी अ गुड जर्नी विद अस, राइट। ब्रिटिश एजुकेशनल सर्विसेज के साथ हम लोग वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अबाउट इट। और अगर आपको कोई भी इमिग्रेशन से रिलेवेंट है, हमारा स्कूल भी है, वी आर डीलिंग विद स्कूलिंग सिस्टम एज वेल, and we are trying to provide the community with better educational services and at our school as well. और हमारे स्कूल में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि हम फ्रॉम बिगिनिंग स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहे हैं कि वो इस लेवल पर डेवलप हो कि आगे जाकर उनके लिए स्टडी अब्रॉड या उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ईजी हो, तो शुरू से ही उनके लिए सारी गाइडेंस अवेलेबल है। सो दैट वी आर डूइंग इट आवर प्लेटफॉर्म। और academy is also available at Papuch Academy for O levels and A levels or other coaching. So this is also available. You can contact us for that. For our certifications, we have been affiliated with AEO for IELTS examination, and we have been recently partnered with IDB Pakistan, and we are going to be a test center. हमारा इंस्टीट्यूट जो है या हमारा स्कूलिंग की जो प्रेमिसेस हैं वहाँ हम ऑफिशियल टेस्ट सेंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास टेस्ट सेंटर स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबली कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आइल्स के टेस्ट को देना चाहें, क्योंकि अभी जो सेंटर है वो यहाँ से काफ़ी फार है, इट इज इन क्लिफ्टन। सो इफ़ यू आर इन फ्यूचर यू आर लुकिंग फॉर आइल्स एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप हमारे ही सेंटर पर आ सकते हैं, दैट इज इन नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक एन। सो यू कैन हैव ब्रिटिश काउंसिल के साथ हमारी मेनली एफिलिएशन है, और ये एफिलिएशन बहुत पुरानी है हमारी, हम इसके आइल्स पार्टनर हैं, ठीक है। So अगर आपको ब्रिटिश काउंसिल से रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन या कोई भी क्यूरीज होती हैं, so we directly deal here. We've got open window for British Council for IELTS test registration also. And now recently PT start हुआ था, तो PT के साथ भी हमारी रजिस्ट्रेशन के साथ और उनके साथ भी हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, so we can have this. अगर आप हमारे साथ किसी भी स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के साथ अगर आप लोग कनेक्ट होंगे, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे पास यहाँ पर उनकी अथॉरिटी है, वी आर ऑथोराइज्ड एजेंट क्या, सो डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फी रिलेटेड कोई, वैसे तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट इन केस अगर आप कोई फी साइड पर देखते हैं तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स आपको दिलवा सकते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे एजुकेशन एफिलिएशंस है, काफ़ी सारे नाम है। कंट्रीज जो भी हम लोग डील कर रहे हैं उसमें जैसे भी डिस्कशन हुआ है, कनाडा, यूएसए, यूके भी है, आयरलैंड है, इटली है, मेनली ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी बता कर गए हैं। सो यू मे डिस्कस व्हाट यू हैव इन योर माइंड। अभी ये हमारा माइंड है जो हम आपको बता रहे हैं, शायद टाइम कम है एंड वी आर ट्राइंग कि हमें आप जान लें, और आई डोंट नो व्हाट योर प्लान्स आर। इफ यू हैव एनी प्लान यू कैन डिस्कस विद अस। Your amount, your budget, the size of the budget may vary. Different people are here and you may have different budget here. So whatever your budget is, you can contact us. कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई रास्ता कोर्स निकल सकता है। हो सकता है कि आप लोग शायद इस वजह से भी डिस्करेज हो जाते हैं मोस्ट बार सेंटर के आइल्स के डिफिकल्टीज आ जाती हैं या कोई बजट डिफिकल्टीज आती है, तो यू कैन हैव आवर कॉन्टैक्ट एंड यू कैन यूज दैट। मैं आपसे थोड़ा सा टाइम बस आपका और ले लें, और आपको सर वर्जिल ऑगस्टाइन जी आपके साथ आएंगे, आपको थोड़ा सा आइल्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट आइल्स से रिलेटेड है तो डील करें। थैंक यू वेरी मच फॉर माय साइड। थैंक यू सर।
English language testing. Assalamu alaikum and a very good day to all of you. Can I have that NED spirit over here? Come on. No spirit. I'm looking for foreign countries here. Right. IELTS. Does anybody know what is IELTS? What is IELTS, basically? It's an English proficiency test. Okay. Any idea that you have? Of course, I'll be giving you that idea what IELTS is and how it is to be catered. What do you know about this English proficiency test? Is it Pakistani based? No. What's the acronym stands for IELTS? Anybody knows that? International. It's an international English language testing system where we stand at the international variant, that where you actually stands at according to the international proficiencies. Of course, we here in Pakistan does not cater very good teachers, right? But what we will be assessed here will be according to the Cambridge University at the international standards. There are two modules basically, that is academic, and the second one is the general, because you are here for the academic catering part. So definitely you'll be looking for the academic, but somehow in future you could have been looking for the general as well. Academic is only for the higher education when you're looking for, and the general is basically for the work and immigration that have already been discussed by Mr. Suhail over here. IELTS test structure that looks like constructs of basically 4 modules where we stand: listening, reading, writing, and speaking. What do you think it would happen? But it would happen. Speaking. You all speak? Yes. I'm speaking. Yes. What do you think? How you will be assessed for your speaking part? Within interview. Sorry? An oral test, okay, where you will be asked to speak onto certain questions and what you will be assessed for. Many people say confidence. Does it matter? Does it matter? Yes. Am I confident? Yes. What? Why I am confident? Why I am confident? Because I know how to speak. Simple. IELTS is this only. In the speaking, when you know how to speak, confidence does not matter. Your body language does not matter here. Here what matters is your English proficiency in terms of listening. So the listening test that will be conducted for around 30 minutes, where you will be going to listening and audios different. 4 sections are there and altogether 40 questions are there. Reading, it's a 1-hour paper where 3 sections are there, and according to that 40 questions has to be answered. For writing, it's 60 minutes where you'll be given 2 tasks to answer around 400 words. How it makes up for 400 words? 250 for your essay writing and 140 for your report writing if you're catering academics, and if you're looking for GT, of course you'll be answering for the letter writing. Then we have speaking, as I'm talking about at the moment, because these are the very detailed part. Speaking I can cater with very easily at the moment. Speaking needs your speaking efficiencies over here. As I said, many people come and say we are not confident, and I always say confidence doesn't matter. Confidence is hidden besides your English proficiency. Speaking for 11 to 14 minutes, where you will be asked, as I said, it's an oral test. 3 parts are there.
and face-to-face, and now there has been module that can go with the VI online as well. PBT, that's what I'm saying. There are two types of tests. One is PBT, what we call it paper-based test, and the second one is the computer-based test. What's the difference? Does anybody know? What makes it a different paper-based and a computer-delivered test? All right. It's virtual, but do you have to do it from your home? What do you think? We have to do it at home. I know. You have to go to your prescribed centers, that is British Council, AEO, or ITP. And you have to go to give your test on the computer delivered. But what makes it a difference is there, paper-based, you're sitting, just like an academic atmosphere, you're giving a test on a piece of paper. Whereas the computer delivered test is basically you're doing on a piece of computer. Paper delivered tests, results come within 12 to 15 days, whereas the computer-based test results comes in 3 to 5 days basically. That makes only a difference over here. Points to remember, in PBT mode, result is declared between 12 to 30 days, as I said. In CBT, that is computer-based test, result is declared in just 3, maybe 5 days approximately. Understanding listening in detail, if I'll just jot it down. Total number of questions, 40, right? Total number of sections, 4. 10 questions in each section. That's how the listening is, where you'll be looking at different audios as prescribed by UK pronunciation. If I give you one word, VOWELS, how do you pronounce that? Vowels. What? Vowels. Anybody else with a different pronunciation here? VOWELS. Vowels. Why not vowels? What is right? Vowels or vowels? Sure. Vowels or vowels? Vowels is a very wrong pronunciation. Unfortunately, our Pakistani teachers have taught us in English classrooms. Even I was taught, but later on when I studied certifications in the English language proficiency, I understood that I was taught wrong with the word vowels. Just a common word that at the moment primary teachers are teaching, and so far we move ahead with the same pronunciations. And here, if we are not aware about the pronunciations in terms of USA, UK, even somehow New Zealand, which is very different, a Canadian accent, which is totally different, right? And the Australian as well. So we must be aware about these 5 different pronunciations in this test, right? By the way, correct pronunciation of that word is vowels. And according to the UK, it's vowels, and according to the Americans, it's vowels. There is no vowels pronunciation. That's a wrong pronunciation delivered here. Pakistani English, what we call it basically. Total number of sections, 4, 10 questions in each section. Number of audios that will be played here will be 4, and time that will be taken away here for you is 30 minutes basically. Types of audios played, different audios will be there in terms of different things. Types of questions that can be a multiple choice, matching, plan, form, sentence structure, etc., etc. There are different questions basically. Understanding reading in detail, if I say in short, because I'll not take you much time for that. Total number of questions, 40 altogether. Total number of sections are this how segregated. Total number of passages that you cater in 2,150 words approximately, where you have to read 3 passages. Of course, you don't have to read because you have 60 minutes where you have to answer 40 questions. There are different strategies, skills, which we learn in the IELTS classes, how to answer them just in 1 hour, which could be very difficult for me as well. Types of questions are these basically, where you have to answer 40 questions in the reading module. Understanding writing in detail, as I said, there are 2 tasks over here. Task number 1 for the academic is report writing, and task number 1 for the general people is basically a formal letter or the informal letter, and task 2 for general and academic both is the essay writing.
and time that it takes is 60 minutes. That makes a 1 hour of your writing module as well. Types of questions that come in your essay writing could be opinions, discussion, advantages, disadvantages, solution, and a direct question essay basically. Parameters on the basis of which an essay is evaluated is the task achievement. How you are answering either according to the question or out of the box. Cohesion and coherence. If a life is not connected, a one parameter of life is connected with the second parameter of a life. Same how your essays must be parametered. Lexical resource, what we call it basically the vocabulary, but in the international standards we use it the word lexica, which means a lexical resource is the vocabulary basically. That's how the speaking is, as I said, where you will be assessed on your speaking circumferences. That's all. Any questions? Thank you. Now the session has been almost done, and we've delivered some of the information about ourselves. You've seen our trainer as well, and you've met our team as well. And now we'd like to have a question answer session. Our team is available over here, and if you can meet directly with your queries so that we can prepare now for all of you. So can you come up with your queries? Our team is here. Excuse me. Okay. I'll look at it, discuss starting what queries they have, and then we can have a short meeting with you. अगर आप लोग free meeting करना चाह रहे हैं, so you can come up with it. Right? Thank you. Some queries. आइल्स की प्रिपरेशन कितनी टाइम की होती है, और अभी ये सवाल पूछने के, और आइल्स की एक्सपायरेशन कितनी है, एक्सपायर कब हुई, 2 साल. तो ये हमें पूछना है. कोई ऐसी बात जो समझ में आ गई है, अगर नहीं आई या आ गई, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा ना. Do you have any question in your mind? You can ask. स्किल ग्रेजुएट वीजा, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्किल ग्रेजुएट वीजे की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी एनईडी की डिग्री. अच्छा. और आइल्स 6 बैंड है, नो बैंड लेस देन 5, राइट, और दैट्स इट. Only 2 things actually you have to get: IELTS and your degree. Then you are eligible to go Australia on skilled graduate visa. ठीक है. इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है. First, you have to keep in your mind, if you want to go on this visa, then after completion of your degree, you can apply for this visa and you should join any organization for 2 years. इस बार Because it is taking around सामने से लीजिए 1.5 year and 2 years to prepare. सामने से लीजिए, Right? तो आपको इस उसमें रखना पड़ेगा कि 2 साल लगने हैं, तो जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, अपना टाइम स्पेंड करें, भले वहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही कम पैसे मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, another thing, as I mentioned before about the Italy and Germany, Khurma is here and he will let you know about it because it's a free education, and not only free education, but also they are going to provide you the stipend, right, per annum, $7,800. So, sorry? Should I? Yeah, sure. Assalamu alaikum everybody. Well, as Kashi said, all the countries are difficult to get the visa, but these days, if you're talking about Italy and Germany, they are the easiest way, right? You just need to have a good CGPA and your result should be good, and there is an IELTS. And if you're interested for a German language, German visa, so there you have to go with the German language and as well as an IELTS, because there you find German taught and as well as English taught universities, right? The session is started. Are you here like first year, second year students, or like you completed your degrees? Is anybody here who completed the degree among you? Nobody is here. So how long would it take? You are all
in first year, final year, right? After completion of your degree, you can visit us, right, at Park British, any campus of Park British. We can give you the guidance on 100% scholarship, right? How? Because it's very easy these days. If you see the social media, right, and all, right, one can do himself. But what we do, we provide the best facility to provide you the exact the path how you get the successful visa, right? Anybody has any question regarding this? At least you can ask what is the minimum CGPA we need. You are not speaking to me. Ask questions, I can give you the detail easily. The minimum CGPA is 2.5. And if you go with 3 above, it means your 100% scholarship is safe, right? So that's the thing. And IELTS minimum 6.5. 6.5. Each in 6, right? Listening, reading, writing, like you have to have. The most important thing is your sponsor. Your sponsor should be from your family, like your brother, your sister, siblings, or your parents, or your grandparents can be your sibling, right? And sponsor, you need some documents such as a bank statement, which should be 6,100 euro, okay? And besides this, the sponsor should be registered from FBR, right? And the tax return should be submitted for the last 2 years. These are the most important documents, like you have to provide at the time of a submission of a visa, right? And besides this, please ask me questions. The short information is this only. And it is really very easy as I'm telling you, right? So many students from Park British, they are in Italy. You can check the page of Park British Facebook or somewhere, like you can find us. The students are giving their live interview from Pakistan and Italy. You will see how Park British has been working, and we've been working for many years, right? For Gulf countries, we are not dealing in Gulf, my dear, sorry. Yeah. The main expertise of Park British is all like UK, Germany, Italy, and other countries. And Kashif Saab has like Canada, Australia, and like all countries. So for Germany specifically, do we have to like consider certain amount? Yeah, for Germany there is a block account. Yes, you have to go with the block account. It's nearly in PKR if you see because of the euro fluctuation is 3.8 or more than that million. You know, so that is why people avoid sending money to Germany directly because before the visa, like you have to submit that in an account, and if you don't get the visa, that will come back, right? And in Italy there is no need of any block account. You have to just show the bank statement of nearly 1.8 or 2 million rupees, right? It means 18 lakhs or 2 crore to 20 lakhs. Yeah. So that the block mounting can be waived off. Block account in Germany that you are allowed to take every month from your account. There's a certain amount like 800 or something you can draw from yourself, right? Every month, not you cannot reach the limit. That is only allowed. Yes, you can. For example, if you completed 2 years from your NED university, there is an exemption like you can go with a bachelor's degree, but not for masters, right? So we usually recommend students if they complete their bachelor's, it's much better because the equivalency of yours Pakistani education is not an equal once you complete your intermediate. But if you are an A-level student, right, you can go directly in a bachelor's. But after an intermediate, there is a tough. And everywhere, like in UK, Canada, and other countries, that intermediate degree is not an equivalent. If you go UK, you have to go with the foundation year. If you go Australia, you have to go with a diploma and others. So in Italy, you have to find, you have 2 years after an intermediate, so you can find bachelor's degree directly. And Italy admission is like little it takes time maybe because this is the right time to apply. Every year they start admissions in the end of the year, like November and December. They have started admission for September 2024. So now we are recruiting students for September 2024, right? And admissions start coming in April and May, and after this we start completing the application session. And once you completed the application in an embassy, so it takes only 20 days or 1.5 months like this. Anything else, guys? Are there any work visas in Italy? We don't work for the work visas. We are working only for the student's visa. But after completion of your bachelor's, you will get PSW. PSW stands for post-study work permit.
like all the students after completing their degree, they usually get. So they can stay there, they can find a job. After any degree, your bachelor's or master's, right? And during the studies, you are allowed to work for 20 hours. This is legally allowed, but usually students do more because they are unable to maintain their maintenance in 20 hours. So what they do usually, they work in cash in hand. Okay, so this is only the formula students usually do. Am I right, sir? But we cannot. I did same when I was in Ireland. I completed my bachelor's right in 2007. So we all did the same thing. We were allowed just because of Mr. Kash. He sent me. He's my mentor as well. Yes, guys, any other question? For Australia, Sir Kashif, for Australia, he's asking for a minimum requirement of what? Result, CGPA or CGPA? Level 1 universities, I think. Except Canada. You can go anywhere on 2.5. Minimum CGPA is required 2.5, but depends on the university. It varies actually. Because if you are going to the high level university like ANU and Deakin or Macquarie, Monash, so probably then you need some more, probably around 2.8. They have different criteria, 3.0, right? But mostly universities on 2.5 you can get the admission over there in Australia. एमआर तो चला जाएगा खुश हो गया Financial sides actually depends on the university. As I mentioned before, it's 20 to 25,000 dollars. It's started from there, and around up to $50,000 you can say that they have the different fees. $25,000 से लेके भाई $50,000 ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोप एंड इंग्लिश कंट्रीज क्या फर्क है यूरोप में और इंग्लिश कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर ठीक है दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिकॉज you have to face the language barrier in Europe, and in English countries you are already familiar with the English, and your all studies and your office work in Pakistan also in English. So that's the reason actually why students prefer to go in English countries. But who doesn't have the budget actually, right? So this is not possible for to go in English countries. That's why actually we have to cater our Italy or Germany or Europe country, because they doesn't have the fee over there, especially in Italy. And in Germany, you have to have an account of around 11,000 something euros, right? In the block account, you have to put this money into the account, and you have around a year actually, then you can withdraw around 863 euro per month from this amount. So that is the formula. So if you have the budget, then I would recommend you to go English countries. If you don't have the budget and you wanna go, in the minimum budget, if you have 5 lakh rupees or 10 lakh rupees, then you should go for Italy or Germany. It's better, I think, because otherwise you'll get a lot of problems and you can't go in the English countries, because it depends on the budget. So this is my actually opinion, that if anybody has good budget, then he can go, in the good universities. I won't recommend you into the colleges, even, because it depends on the financial, financial aspects. Everyone has different financial aspects, and your academic criteria as well. But in Canada, as I mentioned, because you are the petroleum students, and I mentioned before about the salary in Canada of petroleum engineers. So Canada is very difficult destination in terms of get the visa and in terms of get the admission over there. We are in 23, but 24 admission, 2024 admission in Canada has been closed. It's already done. They have no seat over there. So, because I was in Canada and 3 weeks before I was over there, and I was trying to get the admission for my students, but I couldn't get the admission for my students.
They said, no, sir, it's not possible. Into the college even. I asked them about the college, but they are saying, sorry, we have full seats, and in 2025 you can get the admission for your students. So Canada is a different destination. It's quite difficult, but if you have good budget, in Canada especially, I would like to tell you one more thing. If you compare Canada with other countries like UK, USA, Australia, and New Zealand, Canada has the less fee for masters. You know, if you are going for the masters in Canada, they have the less fee, but the admission criteria is very tough. If you have 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 CGPA, I won't recommend you to go over there because you will not get the admission over there. Canada gives you the admission on 3 CGPA, 6.5 band IELTS, no band less than 6 in each module, right? So you have to realize, as I have mentioned, that you have to realize your circumstances, your position, your academic criteria, your bank balance. Then you should acquire or you should select your destination. ठीक है? Anything else? स्कॉलरशिप के बाद कितना बजट होना चाहिए कहाँ पर? कनाडा में? कनाडा में देखिए पार्शियल स्कॉलरशिप होती है, अच्छा मिलती है लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलती, लेकिन देखिए जो स्कॉलरशिप आप चाह रहे हैं ना 100% वाली, Especially if you are from Aga Khan board, these days 100% scholarships are available. अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया टफ होता है, आप मीट कर सकते हैं। अब जॉब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मैं आपको बताऊं वाटरलू है, ठीक है, टोरंटो है, ये स्कॉलरशिप देती है 100%, लेकिन इसका क्राइटेरिया जो है वो टफ होता है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिक्वायरमेंट मीट करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट उसमें हम हेल्प आउट नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के दरमियान डायरेक्टली होती है। देखिए मास्टर रिसर्च मास्टर जो होते हैं ना, उसमें स्कॉलरशिप ज्यादा होती है। ये भी मैं आपसे शेयर कर लूं क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं कि रिसर्च मास्टर्स की स्कॉलरशिप ज्यादा होती है। अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है जिसपे भी आप काम कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सुपरवाइजर मिलना, अगर आप रिसर्च मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है वहां पे एक सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है। आपकी एमफिल या पीएचडी की एप्लीकेशन है, आप उसके लिए जाना चाह रहे हैं, तो अगर वो सुपरवाइजर, आप उसका एंड देखेंगे, पहले वो सुपरवाइजर तलाश करेंगे कि वो सुपरवाइजर का जो एरिया ऑफ वर्क है वो क्या है। अगर वो आपसे मीट करता है तो फिर आप उसको राइट करेंगे। पहले आप सुपरवाइजर तलाश करेंगे। कोशिश कीजिए कि अभी ड्यूरिंग एजुकेशन आप जो भी अपने जर्नल्स लिखते हैं, ठीक है, वो पब्लिश हो, चाहे लोकल्स में चाहे इंटरनेशनल में। ट्राई करें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने जर्नल्स, IEEE है ना आप लोगों का, जर्नल्स का पता भी है या नहीं? जी, पता है ना। तो जर्नल्स जो आते हैं जो पीएचडी के लिए, अगर आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आगे अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, तो IEEE में कोशिश करें कि आपका जर्नल पब्लिश हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप जो है अपनी जो भी आपका सिनॉप्सिस है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छा करें, स्टडीज करें, रिसर्च करें, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। स्कॉलरशिप देखिए ना, हर आदमी पढ़ना चाहता है 100% स्कॉलरशिप पे, कौन नहीं चाहता। मैंने नहीं कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और आईवी लीग से मास्टर्स करूं, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे अलाउ नहीं करते मेरे एकेडमिक सर्कमस्टेंसेस और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। तो फिर मुझे क्या करना है, मैंने अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक अपना डिसीजन लेना है। देखिए लाइफ तो नहीं रुकती ना, आपको अपने मुताबिक अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक डिसीजन लेना होता है और उन्हीं में जो बेस्ट ऑप्शन है वो अवेल करना होता है, ठीक है। तो ये लाइफ एंड नहीं होती है। सीजीपी अगर आपका नहीं आता है, अच्छा आपका कम आता है, मैं आपको बताऊं कि एनईडी का 2.2 भी, ठीक है, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिक क्राइटेरिया है उनका, जो मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ होता है, शायद आपने देखा हो, जो ट्रांसक्रिप्ट आपकी होती है उसके बैक पर जो स्केल बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें आपका 2.2 भी मेरे ख्याल से इकरा के 2.5 के इक्वलेंट होगा।
ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। यू आर अल्हम्दुलिल्लाह NED-uet। ठीक है, जब हम इंटरमीडिएट में थे ना, वो मैं भी प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बड़ी ख्वाहिश थी मिल जाए एडमिशन, लेकिन मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था। ठीक है, तो एकेडमिक्स में अच्छा ना होना, ग्रेड्स का अच्छा ना आना, इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ रुक जाती है। आज PhDs को काउंसिल कर रहे होते हैं, आपने बहुत सारी, मैं तो खैर बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आपने बहुत सारी एग्जाम्पल सुनी होंगी ना, बिल गेट्स की और इसकी और इसकी, सारे भागे हुए कॉलेजेस से। तो एकेडमिक अपने एक्सेलेंस के पीछे जाएं, ठीक है, सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी। 3 इडियट नहीं चल रही है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके पास तमाम नोट्स मौजूद है, ये आपके पास फ्लायर्स आ गए हैं, इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप इस पर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।